Eigenvalue of the nilpotent matrix. We know the definition of the nilpotent matrix. A square matrix A is said to be a nilpotent if A to the power k is equal to null matrix for some k belongs to any natural number, and we know the least positive k which satisfy this condition is called the index of the nilpotent matrix. ये तो हमें पता है. तो यहाँ से हम easily देख सकते हैं what is the possible eigenvalues of nilpotent matrix. Okay, so easily देख सकते हैं. Suppose lambda be a eigenvalue of A matrix A, and we know that by the result of the eigenvalue lambda to the power k be the eigenvalue of A to the power k, but here A to the power k is nothing but the zero matrix, null matrix, so the lambda equals to k is equal to 0. Since the lambda is the scalar, so here lambda is equal to 0 because lambda is scalar. It means this is the without zero divisor, यानी दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं हो सकता इन द केस ऑफ स्केलर. सो ये तभी हो सकता है ज़ीरो जब लैम्डा ज़ीरो. इफ़ द लैम्डा इज़ द आइगन वैल्यू ऑफ ए and A satisfies this condition, it means the A is the nilpotent matrix. Then we can say the only 0 is the eigenvalue of nilpotent matrix. So thus the possible eigenvalue of nilpotent matrix is 0 only. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं ट्रेस और डिटर्मिनेंट के बारे में nilpotent matrix के. Of course the trace of the nilpotent matrix is sum of all eigenvalues, but the eigenvalues are only zeros, so the trace is always 0 and determinant of the nilpotent matrix is always 0. Of course कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं nilpotent matrix पे बेस्ड. सपोज क्वेश्चन नंबर 1. ओके, if A is nilpotent matrix of order n, then under what condition 1 by 2 into I is the identity matrix of the order n plus A is nilpotent. कंडीशन फाइंड आउट करना है. तो सॉल्यूशन आप बता सकते हो. जस्ट थिंक अबाउट द आइगन वैल्यू ऑफ nilpotent matrix. We can easily see here under what condition this is the nilpotent. If this is nilpotent, the eigenvalue of this one must be 0. So the eigenvalue of this one is 1 by 2 plus 0 is eigenvalue of 1 by 2 I plus A, which is 1 by 2 is the eigenvalue of plus A, so which is not equal to 0. So our answer is there is no condition. So there is no condition for being this one is nilpotent. Okay, because the eigenvalue of this one is never 0. So question number 2. If S equals to such that A, B, C belongs to field. Field is the set of real number or complex number. Okay, and of course A is nilpotent matrix. Then what is the cardinality of S? Number 1 0, number 2 3, number 3 8, number 4 infinite. We can easily see here for the arbitrary choice of the A, B, C
or we can say the for infinite choice of A, B, C, we have the infinite number of nilpotent matrix which is in the S. So the cardinality of S is infinite. Simple. Now next question number third. Suppose A equals to 5 minus 3 2, 15 minus 9 6, 10 minus 6 and 4. Then what is the eigenvalues of A? Okay, so we can easily see here trace of A equals to 0 and the determinant of A is equal to again 0, because the we can easily see here this row is depending on the this row, because this is the twice of the this one is the twice of the this row. So if two row are dependent then the determinant is 0, हम easily कर सकते हैं. तो इस केस में we know the characteristic equation of the A. The characteristic equation is A cube minus trace of A plus determinant of A. So this is this one. So the characteristic polynomial is this and the characteristic equation is this one at the x equals to lambda. So lambda equals to 0 0 0. तो अगर वो इसमें में पूछता है is the A is nilpotent, so yes, A is nilpotent. आप इजीली देख सकते हो A स्क्वायर करने पे वो 0 आ जाएगा, ठीक है, यानी नल मैट्रिक्स दे देगा. आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो. सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. सपोज A इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 4x4 का 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3. सो -6 -6 -6 एंड -6. ओके, सो इसमें पूछ सकता है वो क्या A nilpotent है, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. नंबर 1, A is nilpotent दो trace of A equals to 0 3, determinant of A equals to 0 4, all eigenvalues are 0. ठीक है, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आप चेक कर लो कि ये nilpotent है या नहीं है. अगर ये nilpotent हो गया इट मीन्स द ऑल आइगन वैल्यूज आर 0. सो द nilpotent के केस में या आप ऑल आइगन वैल्यू 0 निकाल दो तो ये सब पता चल जाएगा. तो हमें पता है द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस s1 क्यूब प्लस s2 x square minus s3 x plus s4, where si is the sum of the minor of order I. so यहाँ से हम easily देख सकते हैं x to the power 4 and this one is 0 because the sum of all this one, and s2 this one is 0 because the all matrix of the all principal minor of the order 2 are 0, hence the sum is 0. Similarly 3 के लिए भी, and s4 is nothing but the determinant of A. so they all are 0. then the characteristic polynomial is this one, and the at lambda the characteristic equation is equal to 0. so lambda equals to 0 0 0 0. all eigenvalues are 0. so the A is nilpotent, all eigenvalues are 0, trace 0, determinant 0, hence the all option are correct. तो तरीके आपके बहुत हो सकते हैं, आप पता लगा लो nilpotent मैट्रिक्स क्या होता है और देख लो, ठीक है. जब भी कभी आपको ऐसा मैट्रिक्स मिले, ठीक है, नोट लिखवा देता हूँ एक. जब भी आपको एक ऐसा मैट्रिक्स मिले A1 A1 AN
A2, A, sorry, this is A1, this is A2, and so on. This is an minus 1, an minus 1, and so on, an minus 1. And this one is A minus A1 minus A2, and so on, minus an minus 1. Similarly, this one is similarly minus A1 minus A2, and so on, minus an minus 1. जब भी इस टाइप का मैट्रिक्स मिलेगा, इज द ट्रेस इज जीरो एंड द ऑल माइनर सम ऑफ ऑल माइनर आर जीरो, हेंस द दिस इज द निलपोटेंट मैट्रिक्स. तो इसी टाइप का आपका कोई जो ये रूल हमने रो में लगाया है वो कॉलम में भी हो सकता है. सो इट्स अगेन इज द निलपोटेंट मैट्रिक्स. तो ये तो था निलपोटेंट मैट्रिक्स.